ये है अष्टमी के दिन का हम लोग जा रहे हैं, जब रात में माता का जो 16 श्रृंगार होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जो उनका 16 श्रृंगार होता है वो अष्टमी के शाम में ही उनको चढ़ाया जाता है। सो वही हम लोग जा रहे हैं अष्टमी को शाम को माता का सब श्रृंगार चढ़ाने। और ये देखिए अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, सब कोई जा रहे हैं, हम लोग फुल फैमिली। रास्ते में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाइटिंग वगैरह कितनी ज़्यादा खूबसूरत हुई है। छोटे मोटे दुकानदार हैं यहाँ पे, अपना बहुत सारा कुछ कुछ लगा कर बेचते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी से बिक्री हो जाती है, बहुत चहल पहल रहती है, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा जो होता है बहुत देखने में अच्छा लगता है। सो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद का मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया है। अगर आपने मेरा पीछे वाले ब्लॉग को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे विज़िट कीजिए, और उसमें आपको बहुत सारा चीज़ मैंने उसमें उस ब्लॉग में भी दिखाया है। और आज के ब्लॉग तो इस बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरा अंदर माता का जो दर्शन होता है, जो लोग नहीं गए हैं या फिर जो लोग गए भी हैं वो लोगों को पता होगा, या फिर जो लोग नहीं गए हैं वो लोग देख सकते हैं कि अंदर का माता किस तरीके से होती हैं, कैसे उनकी पूजा चढ़ाई जाती है। सो ये देखिए ये सब दुकानदार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे हस्बैंड आगे पूजा का सब सामान लेकर आगे जा रहे हैं मंदिर में। और चलिए मिलते हैं मंदिर में फिर। रुके पहले को नहीं साइड
तो आप लोग को कैसा लगा है मेरा वीडियो। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको माता के अंदर का जो उनकी गर्भगुफा है उसका दर्शन कराऊंगी। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद हो, चैनल पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।